Good morning, young hearts, and a warm welcome. Today, I'll take you to a new place and will take you to a piece of heaven known as Kurg. Yes, the second part of lesson 7 Glimpses of India, Kurg. It is known as coffee country. Yes, it's famous for coffee plantations, spices, and many things which we'll come across while reading the lesson. And let's not waste the time. Let's move on and start with the second part, Kurg. Kurg is coffee country, famous for its rainforests and spices. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women, and wild creatures. So this place, piece of heaven, Kurg, is between Mysore and Mangalore. And this is a land of rolling hills and is home to a proud race of soldiers-like people, martial men, beautiful women, and number of wild creatures. Kurg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforests, spices, and coffee plantations. Evergreen rainforests cover 30% of this district. During the monsoons, it pours enough. Pours enough means it rains enough to keep many visitors away. So during monsoons, people, or let's say tourists or visitors, they do not come to Kurg. The season of joy commences, means start from September and continues till March. During this time, the weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee. Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under the canopies in prime corners. So during this period of joy from September to March, the air is full of coffee fragrance, which is very invigorating, very energetic, and coffee estates and colonial bungalows, they stand tucked under the canopies in prime corners in the best areas. The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. So these people married amongst the locals and their culture is apparent. Apparent means clearly seen in the martial traditions, marriage and religious rites, which are different from the Hindu mainstream. The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus, known as kufia. It resembles the kufia worn by the Arabs and the Kurds. So it is believed that these fiercely independent people, ये जो कुर्ग के जो लोग हैं, जो वासी हैं, ये fiercely independent हैं. मतलब ये आक्रामक रूप से स्वतंत्र रहने वाले लोग हैं और इनका जो डिसेंट है, या हम यूँ कह सकते हैं इनका जो वंश है, वो संभवतः ग्रीक या अराबिक डिसेंट है इनका. और जैसा कि एक कहानी बताती भी है कि इसमें सिकंदर की सेना का एक भाग जो है वो तट के साथ साथ दक्षिण दिशा में चल दिया तथा वहीं बस गया, जब वापस लौटना असंभव सा हो गया. सो उन्होंने हैड मैरिजेस अमंग द लोकल्स और ये उनके कल्चर में अपरेंटली दिखता भी है. बिल्कुल
आप उनकी परंपराओं में, विवाहों में या जो धार्मिक अनुष्ठान है उनमें ये सब दिखाई पड़ जाती हैं, उनकी संस्कृति की झलकियाँ। सो जो कि हिंदुओं, जो वहाँ के हिंदू मुख्य धारा के हिंदू हैं उनसे अलग है। और अरबी वंश का जो है, अरब ओरिजिन जो है, वो उसको सपोर्ट मिलती है जो एक ख़ास किस्म का ये जो ड्रेस पहना जाता है, यू नो, फ्रॉम लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोन बाय द कोडावूज। ये कुपिया के नाम से प्रसिद्ध है और देखने में खुफिया जैसा लगता है। नाम कुपिया के नाम से पसंद है, KUPPIA, और रिजेंबल करता है, उससे मिलता जुलता है, प्रसिद्ध है, खुफिया जैसा लगता है, जिसे अरबी और कुर्दी लोग पहनते थे। कुर्गी homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Khariappa, was a Kurgi. Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. तो ये जो कुर्गी लोग हैं ये अतिथि सत्कार वाले लोग हैं। इनके यहाँ पे अतिथि सत्कार की परंपरा है। एंड दे टेल यू द स्टोरीज ऑफ वेलर, यू नो, ब्रेवरी की कथाएं सुनाते हैं जो कि मोस्टली वॉर से होती हैं। अपने बेटों की बताते हैं या अपने फादर्स की बताते हैं। उनकी वीरता की अनेकों कहानियाँ सुनाने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं ये कुर्गी लोग। और भारतीय सेना में जो सबसे ज़्यादा पदक प्राप्त करने वाली रेजिमेंट अगर कोई है, द मोस्ट डेकोरेटेड, मतलब हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ awards in bravery in war, that is Kurg regiment. And this Kurg regiment had given the first chief of Indian Army, General Khariappa. He too was a Kurgi. और आज भी भारत में अगर किसी को बिना परमिट के फायर आर्म्स यानी आग्नेयास्त्र रखने की अगर अनुमति है तो वो कुर्गी लोगों को है। The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurg. Mahashir, a large freshwater fish, abound in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Elephants, they enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mouths. The most laid back, most relaxed or lazy individuals, they become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. So बहुत सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको कुर्ग में मिल जाएंगी जो कि आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर सबसे ज़्यादा आलसी भी कोई अगर होगा तो वो भी मतलब यहाँ पर आके कन्वर्ट हो जाता है टू द फुल लाइफ यू नो ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। इसमें आप बहुत सारी राफ्टिंग कर सकते हैं, कैनोइंग कर सकते हैं, रेपेलिंग कर सकते हैं। ये सारे एडवेंचरस गेम्स हैं। राफ्टिंग आपको मालूम ही है, रिवर में करते हैं, गशी वाटर्स में करते हैं, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट। और कैनोइंग भी, ये भी इट्स यू नो बीइंग डन इन द रिवर, but it's just like a large narrow boat which is known as canoe. So canoeing लोग करते हैं, rappelling करते हैं, means going down a cliff by sliding through a rope. पहाड़ से रस्सी के सहारे ऐसे नीचे को आते हैं। ऐसे मतलब बहुत सारी ऐसी एडवेंचरस गेम्स हैं जो लोग यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। न्यूमरस बहुत सारी वॉकिंग ट्रेल्स हैं, ऐसे रास्ते बने हुए, ट्रैकिंग है जो ट्रैकर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। Macaques, Malabar squirrels, langurs, and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. They climb to the Brahmagiri hills
brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargdham. Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakuppe is a bonus. The monks in red oak and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India, right here in Coorg. Birds, bees, butterflies, macaques, Malabar squirrels, langurs और ना जाने कितने तरह की जो animals हैं वो आपको कुर्ग में मिल जाएंगे. कुर्ग is actually very rich in its wildlife. मुकेश अब्रोल खुद भी वाइल्ड एलिफेंट्स को देखने के लिए स्टेप असाइड हो जाते हैं. आगे वो बात करते हैं ब्रह्मगिरी हिल्स की कि once you climb the Brahmagiri hills that will bring you a beautiful view of the entire misty landscape of the Coorg. बहुत ही विहंगम दृश्य होता है ब्रह्मगिरी हिल्स पर जाकर कुर्ग को देखना. और बात करते हैं वो रोप ब्रिज की. यस, रस्से वाले ब्रिज की बात करते हैं जो आपको 64 एकड़ आइलैंड निसर्गधाम लेके जाता है. एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो कि भारत की सबसे बड़ी तिब्बतन सेटलमेंट में से एक है जो बाइलाकुप्पे में वहाँ पर है. वो आपको टूरिस्ट को देखने मिल जाए, वो भी एक बोनस पॉइंट होता है. द मॉन्क्स इन देयर रेड, वो किस तरह के उनके वो गेरुए रंग के जो उनके रोब्स होते हैं वो सरप्राइज कर देते हैं किसी भी विजिटर को. और ऐसे विजिटर्स जो भारत का दिल, आत्मा और उसकी खोज में बिल्कुल निकले हुए हैं, वो अगर कहीं पूरी हो सकती है तो वो कुर्ग में जाकर पूरी हो सकती है. सो देयर आर मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग. Let's take some quick revision notes. Coorg, the smallest district, is situated between Mysore and Mangalore. It is situated in hills and inhabited by martial men and women. Coorg is also known as Kodagu. There are evergreen forests, spices and coffee plantations and colonial bungalows. The people are descendants of Greek and Arabs. A story goes that a part of Alexander's army stayed back and married local women, so the present race is a mixture of both cultures. They wear long black coats, embroidered waist belts. Their dress relates them to Arabs and Kurds. The people are brave, hospitable, and are proud to tell about the bravery of their forefathers. The Coorg Regiment is one of the most decorated in the Indian Army. The first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Coorgi. Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. And yes, the river Kaveri, it gets its water from the hills of Coorg. A fish, mahshir, abounds in this water. Animals like langurs drop partially eaten fruit in water. Kingfishers dive in it. Elephants are bathed in it. River rafting, traveling in a boat, rock climbing make life adventurous. Wild elephants, butterflies and squirrels draw our attention. The entire Coorg can be seen by climbing Brahmagiri hills. So, the island of Nisargdham, yes, the most important, the island of Nisargdham and Buddhist settlement at Bailakuppe are interesting places. So in all the Scotland of India, Coorg is actually a place where visitors, they search for the heart and soul of India. Children, these quick revision notes will help you to answer many questions from the text. Now, let us switch on to the questions from the text, thinking about the text given on page number 92 of your book. So, first question is,
where is Kurg? So, I'm sure you all know the answer. Kurg is midway between Mysore and the coastal town of Mangalore, and it is about 250 to 260 kilometers from Bengaluru. Next question is, what is the story about the Kodavu people's descent? So the answer is that it is believed that the Kodavu people are descendants of Arabs. The Kodavus wear the khufia, which resembles the kufia worn by the Arabs and the Kurd. Some people believe that they have descended from the Greeks, who had stayed back after Alexander's invasion. Next question is that what are some of the things you know about, number 1, the people of Kurg? So, the people of Kurg are brave. They are known for their hospitality. They are the only people in India permitted to carry firearms without a license. Second is the main crop of Kurg. So, as it is known as the coffee country, so the main crop of Kurg is coffee. Next is the sports it offers to tourists. It offers to tourists the sports of rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking, all the adventure sports. Next is the animals you are likely to see in Kurg. They are macaques, squirrels, langurs, loris, and elephants. And its distance. Next is its distance from Bengaluru and how to get there. Kurg is about 250 to 260 kilometers from Bengaluru, and we can get there through Madikeri only. There is a fact file also given in your book on page number 92, that how to reach Kurg. So if you feel like going Kurg, you can use this fact file. And now you can see on the screen some questions from page number 93 of your book. One is question number 4, where you have to, replace the words, italicize words in the sentences with their meanings or the same words from the text. And then is thinking about language portion, where collocations, which means word friends, they go together. I have also shared this with you. And there's one more question on page number 9494 of your book, where you have to complete the phrases from the text. I hope you will go through these and will definitely do them in your notebook. ये तो बात हुई टेक्स्ट की और टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। और भारत में रहते ही अगर आपको कभी स्कॉटलैंड देखने का मन हो, स्वर्ग के दर्शन करने का मन हो, तो प्लान जरूर बनाइएगा कुर्ग जाने की। हाँ, मैंने वीडियो में कोशिश जरूर की है आपको दर्शन कराने की कुर्ग के, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो बात तुझ में है वो तेरी तस्वीर में नहीं। तो प्लान जरूर बनाइएगा, कुर्ग को अपने आप देख कर आइएगा। टिल देन एंजॉय, हैव फन, और हाँ, टेक केयर, बाय।